Hello, how are you guys doing? Welcome back to my channel. So I know that I've been missing for very long, मगर एक चीज़ जो आप लोगों ने बड़ी ज़ोर से नोटिस की थी वो ये थी कि एकदम से ये बाल इतने लंबे कैसे हो गए and I've been getting a lot of DMs and a lot of questions about this. So that led me to making this video right now, which is a very honest everything regarding my hair care kind of a video. So I hope you guys enjoy. And don't think this is sponsored, it's just the truth. Okay, so you rarely see hair oiling content on my channel, there's that. But that's all the times that I am oiling my hair. लेकिन उसके अलावा भी मैं करती हूँ because I come to the salon quite often to get these hair oil treatments. That's the easiest one that I can get quickly. And now very less at home. But when I was pregnant, I was doing it religiously. Even postpartum, I was doing it religiously twice a week. This was quite scandalous when I posted about it once, and people were like, ew, they didn't realize that's a number of times. I actually wash my hair. Nahati mein roz hoon, din mein 2 dafa. But I only wash my hair twice a week. यार बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है बट आप जितना अपने बालों को गीला करते हो उतना आपका बाल जो है वो डैमेज से प्रोन होता है, यानी उतना वो टूट सकता है, उतना वो फ्रैजिल होता है. ठीक है, सो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करने के लिए. आपको या तो उसको फ़ौरन से ड्राई करना होता है, आप टावल से ऐसे ऐसे करके उसको ड्राई नहीं कर सकते, बड़ी चीज़ें. तो उतना ध्यान से सब कुछ करने के लिए सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा टाइम होता है मेरे पास सिंस डे वन. इट्स नॉट इवन लाइक अ नाउ थिंग, it's been a forever thing and it's always been like that. Heat styling, obviously. I know I shouldn't do it. I know a lot of DIYs and, heatless tutorials and stuff, but I still end up, like heat styling my hair. The reason I can heat style them so much is because I get a lot of hair treatments done even here at the salon. I really take care of my hair, I'll give it that. So every time that my hair is in distress, I know exactly what it needs. So there's that. जैसे मैं protein treatment कराती हूँ, मैं hair botox treatment कराती हूँ, जब बालों को Olaplex की ज़रूरत पड़ जाती है तो Olaplex करवाती हूँ. And getting these treatments done is what I feel has revived my hair, because if you remember, बिल्कुल खत्म हो चुके हुए थे. The Fino hair mask, for sure, that gives a full-on salon-like feel treatment and it softens your hair so much. By the way, just a pro tip, people usually think it's not doing anything. वो activate ही heat से होता है. So once you do the hair mask, you definitely have to blow dry your hair or hair dry them with heat, and that's how it activates and you get to see the full results. I think, I know that this will sound so weird, but I think any form of, sorry, but sulfate-free shampoos that don't lather, those are the kind of products I personally don't like, because when I'm taking a bath, when I'm washing my hair, I need it to lather. I need to feel like safai hui hai, there's that. So any product that does not end up lathering, I don't like it and I don't use it eventually. I don't even promote it. जो मैंने promote करना बंद कर दिया, it's pretty obvious. I did not like it. Can I say it? सालों से salon treatments और salon shampoos को हटा के, it's always been Sunsilk. Sometimes it's going to be the pink one, sometimes it's going to be the yellow one, sometimes it's going to be the green one. Whichever smells best, that is the one to go. And not just me, my entire family, even back at home, that's the one we used to stick to all along. So I've been big on at-home care, right? You know that, before the salon, before everything else. The truth to this is, it cannot replace the freedom of just relaxing. And you're relaxing and things are getting done. ठीक है. दूसरी चीज़, कंसल्टेशन. आपको नहीं पता होता है कि आपके बालों के लिए एक्चुअल में क्या ज़रूरत है, क्या बेहतर है, और वो आपको सलॉन्स बताते हैं. Like here at Glossip's Beauty Bar, we always consult. We tell you what your hair really needs right now. तो एक तो वो consultation, दूसरी वो freedom, and तीसरा the massages. The massages and the hair washes. मतलब chill करते करते सब हो रहा होता है. You can't do that at home. At home, it's like a full-on thing that you are doing your hair care, So it takes a lot of effort, not in a salon. If I'm being honest, first of all, to jeans, because if I say anything else, everyone's gonna come over here like, dude, jeans. So jeans. Secondly, multivitamins. I'm going to give it that. Pregnancy. That also played a really big role in making my hair longer, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे. Multivitamins played the role because postpartum मेरे बाल बहुत next level dry हो गए हुए हैं and they are not the best. This is not my real hair, just by the way. ये भी heat styling हुई हुई है, which is why heat styling इतनी ज़्यादा हो रही है. But at least अगर मेरे बालों का ख्याल हो पा रहा है, that is through multivitamins, that is through getting a lot of treatments. Like whenever I get the chance, तो मैं hair botox treatment तो ज़रूर कराती हूँ.
हूँ. ओलाप्लेक्स थोड़ा कम कराती हूँ बिकॉज वो नीड बेस्ड होता है, तो मेरे बालों को उसकी अभी इतनी नीड है नहीं. हेयर बोटॉक्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, हेयर ऑयलिंग एंड इफ नथिंग हेड मसाजेस. पीपल ओनली फोकस ऑन द हेयर फॉल बिट. सही है, कोई ये नहीं बताता कि आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल मॉप लाइक, झाड़ू लाइक हो जाएंगे एंड दे विल लुक एंड फील हिडियस. कोई ये नहीं बताता कि आपके बॉल्ड स्पॉट्स होने लग जाएंगे, सिर्फ हेयर फॉल नहीं होगा. मगर कोई एक और चीज़ जो नहीं बताता, फोकस नहीं करता इस पर, वो ये है कि वो वापस ठीक भी हो जाते हैं. दे विल बी फाइन. लाइक दिस इज अ फेज, इट विल गो, योर हेयर विल बी फाइन अगेन एंड ऑल यू नीड टू डू इज हैंग इन देयर, रिलैक्स, स्टॉप just fixating on this because ये बहुत भारी पड़ता है सर के ऊपर. Because obviously for everyone their hair is like the crown that they wear. और अगर वो ही इस तरह से होने लग जाए, it really affects your self-esteem. I know that. और दूसरी चीज़, nothing can prevent postpartum hair fall except for your diet, except for the multivitamins you're taking, and except for time. Because diet और multivitamins भी इतना ही कर सकते हैं, but your overall health and the way you delivered your baby, कितना blood loss हुआ, क्या था, क्या नहीं था, all of these factors depend on how much hair fall you're going to be shedding and how soon it's going to get fixed. Being honest. Mistake, I don't know if there's any mistake, but I will say that they believe this false narrative कि कोई एक magical product आएगा और वो आपके बालों को बिल्कुल ऐसे झड़ने से रोक देगा या फिर आपके बाल बिल्कुल ऐसे वो हो जाएंगे. That doesn't really happen. It is time. And if you are doing a hair care routine, if you are able to take out that time for yourself, उसको merely me time की तरह treat करें, अपना ख्याल रखने के लिए ट्रीट करें. बिकॉज ये वो एक चीज़ है कि जो वक्त के साथ ही सॉल्व होती है. यू कैन नॉट रियली टेक अ मैजिक पिल एंड एक्सपेक्ट के सब रुक जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. दैट डज नॉट रियली हैपन. सो ये काफ़ी एक फॉल्स नैरेटिव है जो सेल होता है. एंड न्यू मॉम्स रियली बिलीव इट बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट वी आर डेस्परेट टू get rid of this situation. We're already going through so much. We don't want another thing on top of this कि यार अब ये भी तो हमें होता है बस कोई फिक्स हो जाए, कोई चीज़ सेट हो जाए फ़ौरन से. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. द डायसन ब्लो आउट, वंस अगेन दिस गोज़ विद दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स के सैलॉन वर्सेस एट होम. वो एट होम करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट. हर दफ़ा उसके लिए नहीं हिम्मत होती. बट अ सैलॉन ब्लो ड्राई इज़ लाइक यू कम, यू सिट, यू गेट इट डन, ला. दोनों के रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट है, आई एम गोना टेल यू दैट. बट आई लव बोथ ऑफ देम. आई डोंट नो यार, मैं कैसे चूज़ करूँ, दोनों मेरे फेवरेट्स हैं. एक्चुअली आई गेट माई हेयर ट्रिम्ड एवरी मंथ और एवरी 2 months. नॉट टू मच, 1-1 इंच कटवाती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि आपके डेड एंड्स होते हैं. एंड एज ऑफन एज यू गेट योर हेयर कट, दैट इज़ हाउ क्विकली योर हेयर टेंड्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, बेटर. एंड जो वो ड्राइड एंड्स होते हैं वो हट जाते हैं. आई थिंक इट वुड रियली कंप्लेन अबाउट ऑयलिंग लेसर and I should be oiling it more, and it would scream on the top of its lungs to heat style less, although I always use a heat protectant. ऐसे नहीं है कि मैं नहीं use करती. You know me, I love my bobs. ठीक है, अभी भी like I just instantly want to run outside, grab a scissor and be like, bob it is. There are so many pictures that I saved on Pinterest and everywhere, different bobs के. Not ये वाला bob, like a लंबा वाला bob, but I keep telling myself कि जब एक दफ़ा मैं थोड़ा सा ही अपना postpartum weight lose कर लूँगी, उसके बाद मैं bob कटा लूँगी. जब मैं इस weight पे आ जाऊँगी तब मैं कटा लूँगी. Although this has nothing to do with the weight, it's just me trying to make myself wait longer so I can enjoy this hair. Even my hairstylist tells me that ma'am, I'm not going to cut your hair because आपने पूरा ऐसे मज़ेदार कलर करवाया और ये सब, इसको enjoy करें, मैं इसको नहीं काट रही अभी. Imagine. So this is it for the questions that are asked mostly, and we also added a few fun questions just to make this video a little bit more interesting. But this is pretty much it for this video. I hope that you guys enjoyed it. I hope that you guys will give this a like, you guys will subscribe to my channel, and I will catch you guys in my next video. Do let me know in the comment section what you want to see next. Bye!